Now let's listen in to some political reactions coming in. हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। There has been a slew of new proposals, but one must also see what happened to the proposals announced in the previous budget, because some grand schemes were announced in the previous budget as well. So what is the status of them? And now another slew of schemes have been announced, which will all, even by their own words, will only get fulfilled well after the culmination of this parliament in 2029. So we'll have to see the efficacies of all these schemes. It's quite natural that, every time a state comes up for election, it seems to be, it gets a disproportionate amount of attention. But that seems to be the political direction in which budgets are made these days. हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। विकसित भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये बजट है। अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है। गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है। इस बजट में जहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है, तो वहीं महिला, युवा और देश का मध्य वर्ग, उसको कैसे हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर उसको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। अलग अलग सेक्टर, एमएसएमई का सेक्टर हो, हर उस सेक्टर पे इस बजट में ध्यान दिया गया है। ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है? आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग, सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है। दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। पूरे देश भर हमारे बहुत सारे जो ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं, उनका एक एक्सपेक्टेशन था कि रिलीफ आएगा और जबरदस्त रिलीफ आएगा। जो फ्लोर था 7 लाख का, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 8 या 10 लाख तक जाएगा, 12 लाख तक जाके पूरा ये जबरदस्त हिट हुआ है पूरे देश। Now for more on this, we're joined live on this broadcast by Amitabh Kant, who's a former CEO of Niti Aayog. Thank you so much for joining us, Mr. Kant. Thanks, my pleasure. So let me begin by asking, how do you assess the government's approach to balancing the fiscal prudence with the growth priorities? What is your take on that? So I would, really compliment the finance minister in this budget, because she's really pushed the demand factor, which is very critical for India's growth story at this point of time. And when consumption grows, then demand grows, then production grows, then growth happens, then jobs are created. It's a cycle. And by providing this 1 lakh crore and no tax till this limit,
she's really put a lot of money in the hands of the middle class, and therefore consumer demand will go up. And with consumer demand going up, it should lead to a greater amount of growth in the Indian economy. And she's done this in a fiscally prudent manner, because the fiscal deficit this year was about 4.8, and she's hoping for a 4.4% next year, which shows that she's been a very responsible and a very prudent finance minister. Right. As you've said, it has brought a much-needed respite for the middle class. But at the same time, I want to ask, what message does the budget send to foreign investors? Well, one is that it's pushing for growth, which is the message which should go, because right now, globally, production supply chains are broken. There's a huge aspect of tariff wars going on, and there's a challenge on many fronts. And at this point, India, which is a fast-growing economy, has come out with a budget which is fiscally very responsible, which is pushing for further growth, which is pushing for job creation in a range of areas like tourism, toys, footwear, leather, which is also pushing for cutting-edge technology, nuclear energy, which is pushing for small modular reactor, which is pushing for AI, but which is also emphasizing its startup movement in a very big way and pushing for deep tech. So and innovation. So it sends out the right message to my mind. Also, by opening up the insurance sector to 100% FDI, it is sending out a message that it welcomes foreign investment in India. Right. And that leads me to my last question, Mr. Kant. Do you think that the budget allocation is enough to accelerate India's green transition? India's strategy for going green has been largely private sector driven. But what the government has done is to build the right policy, get the right technologies, and enable through policy and structuring a lot of venture capital and PE funds to come into India, and long-term lending has come into the green sector. And I think that should be the strategy. It should be the private sector-driven story for a long, long time if you have to go green. And if now we are a major importer of solar components, of batteries, of storage items, and of electric vehicles. And in all this, the new clean tech mission should really help us drive Atmanirbharta and make it India in a very big way. Definitely. Thank you so much for joining us, Mr. Kant, and sharing your perspective. Thank you. Thanks.